Good evening, all of you. Is there somebody from Patliputra Sahodaya? May we start the session? Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you. Dear friends, today we have gathered on this digital platform with the help of Patliputra Sahodaya. So first of all, thank you Patliputra Sahodaya for this online meet. And today we are going to discuss a very, very important topic, that is teaching learning styles. You all must be a fan of someone Shah Rukh Khan's fan, someone Amitabh Bachchan's fan, someone Devi, someone likes, I don't know so many names. I'm so sorry. Uh, uh, I hope I'm audible and visible. Okay. So why do we like them? What is the reason? Why do we like them? The reason is that we get fascinated by their style. There is something good in them, in their style. Maybe you like the hairstyle, maybe you like the personality, maybe you like the height, maybe you like the muscular body, maybe you like the six packs, maybe you like the way the person talks, the way the person walks, whatever it may be. But actually, we are fascinated by somebody style becomes our role model. So similarly, as teachers, every teacher has got a distinct style, a distinct fragrance, a distinct ethics, which actually fascinates or does not fascinate a child. Both ways it is possible. So, what is that? What is that teaching style of yours? Can you identify it? Or if required, can you improve it? And if you want to improve it also, for that also identification is very, very important. And you should know what are the different teaching styles. Suppose you have teaching style A, which you feel it's not going through because you are a teacher. You know whether your class is liking you or not, your students are happy with you or not, you are able to go break through them or not, you are able to secure the percentage that you want or your management expects from you or not. So all this can happen once you know what is your teaching style and what are the other possible teaching styles. So if you're not happy with yours, you can change or you can have a mix and match. Similarly, every child also has his or her learning styles. I learn in a different way, you learn in a different way, I talk in a different way, you talk in a different way. You can copy my PPT, but you cannot copy my style. Are you understanding? You may have every slide that I'm going to use today, but still your way of delivering and my way of delivering will be different because we are two different human beings. So you must understand this also, that when you enter the class, which has a 40 strength, okay, and then you have one lesson plan and one style with you, and you want to cater to the requirements of 40 students in your class, and maybe no teacher teaches only one section, maybe you're going to 3 sections, 4 sections, 5 sections, so 14 to 5 students, and you have one teaching style. So will the child be able to learn through that? Not possible. Because children also have different learning styles. I like to eat chow mein, you may not like to eat. I love paneer chili, you may love Manchurian. I may love chicken, you may love mutton. So our tastes are different, our learning styles are different, our teaching styles are different. So it's very important and inevitable for a teacher to understand that what are the possible learning styles which a teacher has to cater to in order to go to get through all students in the school, and what are the teaching styles available. अभी मार्केट में आपके पास साड़ी भी अवेलेबल है, सलवार सूट भी अवेलेबल है, पैरेलल भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मेनी थिंग्स, यू नो, लो वेस्ट ट्राउजर्स भी है, स्लिम फिट भी है, नॉर्मल फिट भी है. तो आपको पता होना चाहिए ना कि इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, तो आप कभी ये ट्राई करोगे, कभी वो ट्राई करोगे, कभी वो ट्राई करोगे, ताकि आपको ये अल्टीमेटली पता चले कौन सा स्टाइल मेरे पे सबसे अच्छा लगता है. So teachers, keep on experimenting, keep on trying different teaching styles, keep on trying different learning styles of the students. That means you change your teaching style, because teaching and learning both go hand in hand. They're not standalone. Please remember this. The moment you teach, the child starts learning. The moment the child starts learning, you are teaching. So, that should go hand in hand.
अगर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो but the children are not able to understand, not able to learn, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी टीचिंग स्टाइल में कुछ प्रॉब्लम है. सो आपको एक सुधारोगे तो दूसरे में इंप्रूवमेंट आपको ऑटोमेटिकली नजर आएगा. So you understand now how important this topic is. So today we're going to discuss this topic, that is teaching learning styles. Now, without going into more of introduction, let me simply dive into this topic. So I start sharing. Let me share my screen so that when you look at the PPTs, you understand a little better that what we are trying to do actually. Just give me one sec. Okay, so we are going to share the screen and I hope my PPT is visible to all of you. Okay, is it, friends? You can reply through the chat box also. Okay. Okay, fine. Now, I'm putting it in the slideshow view so that all of you can easily see that. It is taking a little time. I think my bandwidth is a little slow today. Okay. So this is a very, very vibrant topic. There is so much to do, but we have only 1 hour. So I'm very sorry we cannot be very interactive, but still I'll try to put across the things so that you know what happens is that you can do a little bit of research on this. And if you really want to know your teaching style, your learning style, I'll show you the path. But then you have to travel on it and you have to understand that what actually your teaching style is and how you can do a makeover of yourself and your teaching styles. Okay, so I'll go back to this. Okay, now we are into it. So welcome to this in-house session and thank you Patliputra Sahodaya for giving me this wonderful opportunity. Now, today what we're going to learn is identify the current teaching style. That is your current teaching style. Okay, I will show you only the path, friends. I cannot identify everybody's teaching style together because of this platform. I'll tell you how you can do it and you can always try it tonight itself. It's very simple and very easy. Next, create a personal teaching style that enhances learning and makes teaching effective. As I told you that there are many teaching styles available. There are many teaching styles available. Now you have to understand that which teaching style you want for yourself. How you can mix and match. अभी आप बहुत लोगों को देखते होंगे, मैं एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ. अगर हम उनको चावल भी दे, रोटी भी दे, दाल सब्जी भी दे, तो बहुत लोग, जैसे अगर आप मुझे सर्व करेंगे तो मैं पहले चावल के साथ दाल खाऊंगी, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो सब्जी से भी शुरू कर सकते हैं, दाल को लास्ट में पी लेते हैं. So everybody has got a different style of eating. Similarly, you should also keep on trying different styles of teaching. Don't make yourself monotonous. Don't make yourself predictable. जैसे अभी मिताली मैम आएंगी तो आप सबको पता है कि पहले मिताली मैम आएंगे तो गुड इवनिंग बोलेंगी, फिर थैंक यू बोलेंगी, फिर स्लाइड दिखाएंगी. नो, maybe today मिताली मैम is going to do something different. So always, you know, बच्चों के दिमाग में ये होना चाहिए कि आज सर क्या करेंगे, आज मैम क्या करेंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. You should not become very monotonous and very predictable for your students. Try to do something different. Okay. Next is acknowledge that the lesson should be structured and tailored in line with the needs and skills of the learners. Yes, this is the very first thing I told you, dear friends, that you cannot go with the same lesson plan to every section and every class. You have to change your lesson plan. When I say lesson plan, I don't mean the content. Content तो आप change कर ही रहे हैं class के हिसाब से. What I mean to say is the way you deliver in the class. Okay, because as you may have different teaching styles, similarly children also have different learning styles. A style which suits me may not suit my partner. So teachers have to keep on innovating because
Today's learners are no longer the people our educational system was designed to teach. आप अपने स्कूल के दिनों को एक 10 सेकंड के टाइम में आंख बंद करके याद कीजिए. हम स्कूल जाते थे, हमारे स्कूल में एक सिस्टम होता था, वही रोज फॉलो होता था, वही रोज फॉलो होता था. तो हमारे टीचर्स आते थे, हमें बोर्ड पे कुछ लिखते थे, उसके बाद हमें कुछ नोट्स लिखाते थे, उसके बाद करेक्शन करते थे, वॉट एवर, जिस स्कूल में जैसा भी होता हो. ठीक है. तो आप अलग थे और आज के बच्चे अलग हैं. अगर आप भी उसी पैटर्न पे, जैसे मान लीजिए आपकी कोई फेवरेट टीचर होंगी, अब आप उसी पैटर्न पर अगर आज के बच्चों को पढ़ाएंगे तो शायद वो आपकी तारीफ नहीं करें. बिकॉज लर्नर्स हैव चेंज. आज के लर्नर्स 21st सेंचुरी लर्नर्स हैं और आप 21st सेंचुरी लर्नर्स नहीं थे. सो द रिक्वायरमेंट हैज चेंज. नाउ योर प्लेटर हैज टू चेंज. आप याद करिए जब आप पहले रेस्टोरेंट जाते थे आज से 10 साल पहले, 15-20 साल पहले, क्योंकि दैट वाज द टाइम व्हेन वी वर आल्सो इन स्कूल और कॉलेज. 20 साल 30 साल पहले की बात मैं कह रही हूँ. क्या हमारे पास होता था एक नॉन वेज प्लेटर इन द स्टार्टर, वेज प्लेटर. क्या हमारे पास इतनी सारी डिशेस होती थी? लसाग्ने, क्या क्या होता है, माय सन ईट्स, आई डोंट ईट ऑल्दो. तो ये सारी डिशेस जब मैं देखती भी हूँ तो मुझे लगता है यार, हाउ आर यू ईटिंग दिस, व्हाई आर यू ईटिंग दिस. So it has changed. The taste buds have changed. The styles of learning have changed. So your teaching styles also need a change, my dear. Don't stick to it. That traditional form जो होता था, अगर आप वहीं अटके रह जाओगे तो you will be out of date, out of fashion. So teachers को भी हमेशा fashion में रहना है. So keep on updating yourself, keep on upgrading yourself, keep on changing your teaching styles as per the requirement of your students. Now, what are the 4 pillars of education? I'm talking about contemporary education, today's education system. What are the 4 pillars of education? First is know. You must know your child. आपको पता ही नहीं, आप एक क्लास में गए, फॉर एग्जाम्पल आप 6A में गए, आपको पता ही नहीं है उस बच्चे के फादर के साथ क्या हुआ अभी इंसिडेंट, उस बच्चे ने शायद अपनी माँ को लूज किया लास्ट मंथ, उस बच्चे के पापा क्या काम करते हैं, उनके पापा को बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं आता, ही इज नॉट इवन लिटरेट, सो यू कैन नॉट हेल्प द चाइल्ड. यू डोंट नो योर चिल्ड्रन. तो आप कैसे उनके रिक्वायरमेंट्स पूरी करोगे? अब मुझे बताइए. हम सिंपल अपने घर में किसी को डिनर पे बुलाते हैं, किसी को लंच पे बुलाते हैं, तो हम पता करते हैं वो नॉन वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन है, उसे पनीर पसंद है कि मशरूम पसंद है, वो उसे किसी खाने से एलर्जी तो नहीं है. अकॉर्डिंगली अपनी मेन्यू प्लान करते हैं. और आप क्लास में जाते हैं, एक बच्चे का भविष्य बनाते हैं. यू आर क्रिएटिंग द नेक्स्ट सिटीजन of the country, of the world, a global citizen, and you don't know the child. How will you create? How will you differentiate your instructions for the child? I hope you understand the meaning of differentiated instructions. छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. आप क्लास में आप जाते हो, क्लास में आप देखते हैं किसी बच्चे को, कुछ बच्चे प्राइमरी टीचर्स होंगे उनको शायद ये ज्यादा एक्सपीरियंस होगा. यू स्टार्ट टीचिंग द चाइल्ड, बेटा राइट सी, इट्स अ कर्व लाइन. Some children write opposite side. Instead of B, they write D. Instead of N, they will not put the line from top to bottom. They put the line from bottom to top, or maybe diagonally different. So, do you know these children? Now, suppose somebody has problem in writing C, and you give the homework A. Write A. अरे बच्चा तो A लिखता ही है सही, आज उसको homework में C दीजिए. So, your homework for that child is a little different because the child has got a different problem. So friends, you need to know your students. मैं आपको बताती हूँ पहले क्या होता था. हम जब स्कूल जाते थे, जैसे मेरे स्कूल में तो नहीं होता था because I was in a missionary. But my father used to tell, in my school the teacher knows everybody. फलाने के बेटे हो, फलाने के नाती हो, फलाने के पोता हो. The teachers had the entire, you can say, the kundali of the child. That is not because the teachers would be biased. That is because the teachers would be able to cater to the requirements of the student in a much better way. So please understand, teachers, you need to first know your children. Who are they? From which background they are coming? What they are good at? What they are not good at? What are their requirements? How do they learn? What do they learn? When do they learn? So these things have to be known to the teacher. Next is do. How do you do it? Once you know about the child, you can do something for the child. You can do, as I told you can give a differentiated worksheet to the child कि बेटा आप सी का प्रैक्टिस करना आज घर में, आपकी ए बी ठीक है, आप सी करो, बाकी क्लास को हम ए बी सी दे सकते हैं. तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको कुछ डिफरेंट चाहिए होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सारे बच्चे दूध नहीं पीते हैं, तो मम्मा क्या करती है उनके लिए, पापा क्या करते हैं, दूध की जगह उनको रिप्लेस करते हैं. मेरी एक फ्रेंड थी, वो अपने बच्चे को दूध की जगह आइसक्रीम खिला देती थी. जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो
so that her logic was कि जब वो दूध नहीं पीता है तो दूध की रिक्वायरमेंट आइसक्रीम से इसकी पूरी हो जाती है. You have to do that for your students also. Be there. What does it mean of be? Teachers are there with the kids. What happens is, teaching is not a 5 hour or a 6 hour job. Teaching means what? You are there with your child always. Whenever the child needs you. अभी टीचर्स डे आती है तो वो सारे आप वो लिखते हो ना कोटेशंस. टीचर इज अ कैंडल बर्निंग इटसेल्फ. तो वो सिर्फ कोटेशंस नहीं है एक्चुअली फ्रेंड, दैट इज रियल. अगर आपके बच्चे को आज कुछ प्रॉब्लम होगा, वो रात के 2 बजे भी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, रीच करने की कोशिश करेगा, तो टीचर इज ऑलवेज देयर. सो टीचर इज नेक्स्ट टू गॉड. लाइक डॉक्टर्स, आफ्टर दैट टीचर्स. So you have to be with the child. चाहे वो lunch break हो, चाहे वो corridor duty हो, चाहे वो bus duty हो, चाहे वो washroom duty हो, चाहे वो normal classes हो. Some of us get very bogged up. Ma'am, I will not do washroom duty. Sir, I will not go to the bus. I cannot go do the bus duty. इतना लंबा लंबा route घुमाता है. But the teacher has to be there with the child. How do you know in the bus उसके साथ कुछ ऐसा नहीं हो जाए जिसमें आपकी जरूरत हो उसे? So you have to be with the child. You have to be with the child and live together. How do we live together? School is a small community. And actually in this small community, friends, we are preparing the children to face the larger community which is outside the school. What is school? It's a community. You have children of all religions, all kind of caste, all kind of financial background, family background, all with different food habits, with different teaching, dressing styles, with different tastes, with different kinds of families, with different kinds of parents, from different fraternities. You have people in the school, and everybody lives together, just like we live together in the world, in our apartment, in our community. So those schools which do not teach the students to live together, वहां के बच्चों को हो सकती है कम्युनिटी में जब वो बाहर जाए तो वहां भी उन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े. So this is all about education. So I think now you understand very well why do you need to change your teaching styles quite often, because the same old style will not work for year after year. Now you are catering to the requirements of ऐसे बच्चे. कैसे बच्चे? 21st century के बच्चे. वो कैसे होते हैं? उनका अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट. देखिए उनकी जो मेरिट्स होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कम, लेकिन डिमेरिट्स ज्यादा बता रही हूँ, सो दैट आप अपने आप को तैयार कर सको. डिमेरिट्स हैं, रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते. तो आपको ऐसी मैकेनिज्म बनानी होगी अपनी टीचिंग मेथड में दैट दीज डिमेरिट्स कैन बी ओवरकम, द चाइल्ड कैन लर्न बेटर. सो द फर्स्ट वन इज शॉर्ट अटेंशन स्पैन. Today's children have very short attention span. When I was in school, I heard that the students have 20 minutes of attention span. But now what's the fact? The children have 6 to 7 minutes of attention span, maximum. And your period is of 35 to 40 minutes. So what do you need to do? You need to have transitions in between. After every 6 to 7 minutes, you have to do something that the child feels a transition. It should click there. आप पानी पीने बोलो, आप एक छोटा सा फिजिकल एक्सरसाइज करा दो, आप एक राइम करा दो, आप गाने का 2 लाइन सुना दो, whatever you do. You show them a small video, you do a case study with them, which is not directly related to the subject matter. But you have to take them to a different world and bring them back to this world so that the child again comes back with a lot of attention. And 6 minutes more is given to you. Next, today's children, they crave for interactivity. See, everybody wants to talk. बहुत मन लगता है. आप क्लास में देखो, everybody is talking and every time you will say keep quiet. It will not work. Instead आप अपने क्लासरूम को ऐसे डिजाइन करिए, आप अपने लेसन प्लान को ऐसे डिजाइन करिए that you talk less and the children talk more. So that वो जो keep quiet नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिविटी में आप कन्वर्ट कर सको, क्योंकि वो बात करेंगे. They are interactive, so you cannot hold them back by just telling them keep quiet. Okay, in that way you're killing the zeal of learning within the students. Then they read visual images. Like बहुत आप और मैं, हम लोग बहुत दूर दूर हैं. हो सकता है कोई पटना के एक कोने में है, हो सकता है दूसरे कोने में है. I don't know. But this presentation is actually the binding between us. So visual होते हैं वो बच्चे, यानी आपको क्लास में कुछ visual करना होगा. So you go for columns, okay? You go for mind maps, you go for charts, you go for teaching aids, you go for drawings, you go for documentaries, you go for some visual things in your class.
जैसे आपकी क्लास में अगर स्मार्ट बोर्ड है तो आप उसको यूज करिए, आप बच्चों को कुछ दिखाइए, कुछ पेड़ पौधे, खिड़की से ही बच्चे बाहर क्या देख रहे हैं उससे रिलेट करिए अपने क्लास को, सो दैट द चाइल्ड इंजॉयज, क्योंकि आज के बच्चे को विजुअल इमेजेस बहुत पसंद है. Next, these 21st century learners have weak reading skills. That means वो पढ़ते नहीं है. क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि most of the time तो मोबाइल का डेटा पढ़ते हैं. तो वो book reading is very very weak. So you have to do something कि वो book reading अच्छा हो जाए, लेकिन in an interesting way. अगर आप उसको रोज कहेगा तुम 2 पेज पढ़ो मेरे क्लास में, तो थोड़े दिन में बोर हो जाएगा आपसे, फिर आपकी क्लास नहीं अटेंड करना चाहेगा, because they don't like that. Next is visual spatial skills. This is the plus point, you know. They are very good visualizers. आप आज देखते हो, so many games have come up on the digital platforms. What is that? That is, I think, one of the best ways you can judge the visual spatial skills. इतनी बेहतरीन गेम्स आ गई हैं कंप्यूटर पे कि it's very difficult to find out it's a real or it's animated. Such wonderful animations. Who has done this? New century people, because they're very good visual spatial skills. So utilize that. And they have fast response time. Many a times I tell my children this, beta, you are so fast that you raise your hand before the question is completed. So they will say, yes, ma'am, yes, sir. Before you finish the question, they're ready with the answer. They are so fast. That is why they have short attention span. That is why they crave for interactivity. That is why they have weak reading skills. That is why they want more of visual. They're not auditory learners, they're visual learners. Okay, so please note down these shortcomings and strengths of the 21st century learners and plan your lesson plan to cater to these requirements, not your requirements. What are you doing in your lesson plan? Most of you, I'm not saying all of yours. Most of us, what are we doing is we are planning a lesson to complete the syllabus, isn't it? But what you should do is we should plan a lesson to cater to these requirements of the child and complete the syllabus. It is a tag. Okay, don't make it the main module of your thing. Next, these are the skills of the 21st century learners. So 21st century classrooms, how should they be? How should they be? They cannot be traditional classrooms. Suppose your teaching method is non-traditional, so classrooms कैसे traditional होंगे? So your classrooms should ideally be without walls. I don't mean that tomorrow you go to your school and start breaking the walls. Please don't do that. Huh? They will ban me as a resource person then. What I mean to say is that you have to take your children outside the wall. Whatever is present here in this my living room, that is not the entire world. ये आपको बच्चे को समझाना है. तुम यहाँ हो, तुम क्लास में फर्स्ट भी आ रहे हो, दैट इज नॉट द एंड. उसके बाहर भी एक दुनिया है. तो बच्चों की इमेजिनेशन को ना आप लीड करो. Take them to a world which is beyond the walls of the classroom. Then today's classroom should be interactive. As I told you, give more chance to the child to speak and you speak less. Today's classrooms have to be online. Online in the sense, if you actually want to work on every child, then very soon please be prepared for always a hybrid mode. Without some online data, without some online assessment, without some online input into your classrooms, you cannot make the best of your students. Next is bring your own device, BYOD. What is the meaning of this? You must have seen, if you talk about the education system, when suppose I ask you a question, what do you think? Which country's education system is very fast progressing? Definitely you will say, maybe somebody will say America, somebody Japan, somebody Finland, somebody Australia, whatever. But go and search the videos. You will see everywhere what do they have. The children bring their own tabs. The children bring their own devices to school, so that the interaction between the teacher and the child is without any break. Because today's children are very very fast, they are very fast response time. तो वो तो इसी से होगा ना. टीचर ने क्वेश्चन किया, बच्चे ने जवाब दिया, टीचर ने तुरंत देख लिया सही था गलत था क्या था. अगर आप बच्चों को कहोगे कि आप पेपर में लिखो, फिर आप घर ले जाओगे, फिर आप करेक्शन करके 3-4 दिन बाद लौटाओगे, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम और बच्चों के रिस्पॉन्स टाइम में बहुत फर्क आ गया. सो दे विल नॉट जेल विथ यू. फिर आप कहेंगे ये हमारी जनरेशन जैसे नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यू नीड डिवाइसेस. Then you have to be multilingual, especially in the primary classes. मैं हमेशा कहती हूँ, ये मेरी बहुत फेवरेट सेंटेंस है
कि जब बच्चा किसी अच्छे स्कूल में जाता है, स्पेशली बिग स्कूल में जाता है, then the child already has maybe he's a Tamilian child, or he's a Malayali child, or he's a Uriya child, a Bengali child, a Gujarati child, whatsoever. So the child comes to your school with a new language, and what do we do in the school? Don't speak a word in Hindi. बाकी लैंग्वेज की तो नाम भी नहीं लेते, क्योंकि इमेजिन ही नहीं कर सकते कि किसी को दूसरा लैंग्वेज आता भी है. We only say, don't talk in Hindi, don't talk in Hindi, not a word in Hindi, speak only English. So what happens? The child comes with a language, and in the school that language is slaughtered and killed till it takes its last breath. And we make the child English, English, English. We have damaged Hindi also so much. You see what the children write in the notebooks, answer sheets these days. I think you all are teachers, you will agree with that. The Hindi teachers, they have realized this, that there's a fall in the writing of Hindi. Somebody is agreeing with that. Why? Because we always have focused कि भैया आपको सिर्फ इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश सोचना है, इंग्लिश समझना है, इंग्लिश देखना है, इंग्लिश करना है. I'm not against English, but why to kill somebody to give birth to somebody? You let English flourish, but you let other languages also flourish in your school. What if tomorrow you can do an assembly with 10 languages, 10 different students? Don't kill that. And if one child in my class knows Malayali, I think my entire class will learn some Malayali. That space of breath should be there. Allow the children to learn and breathe in the class. Okay, today's classrooms are in the cloud also, because if we go online, we have to be in the cloud. And what is PBL? Problem-based learning. You face a problem and then you learn how to solve it, like case studies. There is a case study, suppose you discuss in the class, and then you tell the children only, अच्छा बेटा बताओ इसमें क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए. तो आप प्रॉब्लम्स भी दो आप बच्चे को, और बच्चों से ही सोल्यूशन भी लो. और in the process of getting a solution to a problem, the child learns. Okay, thank you for the wonderful remarks in the chat box. I'm really indebted. Let's move further, friends. So the students evaluate what they see in their teachers. Teach me the way I want. Today's children have the guts to say this. Maybe you did not have the guts when you were in school or I was in school, isn't it? But today's children will say, please, ma'am, mujhe nahi samajh mein. I cannot understand like this. Tell me some other way. We cannot teach the way we were taught. These are just reminders for you, friends. Please, please. बहुत लोग ऐसा लगता है क्यों कहा जा रहा है एनईपी इज आल्सो सेइंग ट्रेडिशनल मेथड में मत पढ़ाओ, ट्रेडिशनल मेथड में मत पढ़ाओ. यार ट्रेडिशनल मेथड में प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं. ट्रेडिशनल मेथड इज वेरी गुड, बट द प्रॉब्लम इज जिसको आप वो ट्रेडिशनल मेथड देने जा रहे हैं वो बदल चुका है, वो लेने के लायक नहीं उस मेथड को. बिकॉज आप दान तो पात्र के हिसाब से देंगे ना, तो आपका पात्र चेंज हो चुका है, तो आपका दान भी चेंज होना चाहिए. Are you getting my point? चलो. Okay, so literacy is actually redefined now. What is the meaning of redefined literacy? Literacy is redefined because today we have embraced connected learning. मतलब teacher and student में हमेशा connection रहेगा, and that can only be possible through online. We have to embrace the change. Please teachers, please, I'm again requesting, जो लोग को बहुत डिफिकल्ट लगता है क्यों ट्रेडिशनल मेथड में नहीं पढ़ाए, क्या प्रॉब्लम है इसमें, प्लीज आप ये सोचना ही बंद कर दो. पता है, सोचना ही बंद कर दो. आप ये सोचो कि नहीं मुझे बदलना है, वो अच्छा है बुरा है, कैसे करना है, क्या करना है, आप सब छोड़ दो. सिर्फ आप सबसे पहले ये सोचो, आई हैव टू चेंज माई स्टाइल ऑफ टीचिंग बिकॉज माई चिल्ड्रन हैव चेंज्ड. अगर आपको पहले मान लीजिए, यू ऑल आर पेरेंट्स, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ योर पेरेंट्स, आई कैन नॉट से ऑल. सपोज पहले आपको एक बेटा है, ओके, तो आप उसके लिए पैंट शर्ट खरीदते हो, आप उसके लिए डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस जो भी आप खरीदते हो ना. फिर आपको मान लीजिए एक बेटी हुई, तो क्या वही ड्रेस पहनाओगे उसको? नहीं पहनाएंगे ना वही ड्रेस. वाई हम नहीं पहनाएंगे? वो ड्रेस खराब था ये नहीं कहना. आप इसलिए नहीं पहनाएंगे क्योंकि आपकी बेटी हो गई. देयर इज अ चेंज ऑफ जेंडर, सो द ड्रेसिंग स्टाइल विल आल्सो चेंज अकॉर्डिंगली. सो कहीं से भी किसी भी टीचर के मन में नहीं होना चाहिए कि मेरा ट्रेडिशनल मेथड पुअर है. नहीं है पुअर, इट्स वेरी गुड. But you know what has happened? The students have changed. So we now change our teaching style according to the needs. Clear? Augment classroom teaching. Augment means jorna. You have to add on. So classroom teaching, normal classroom teaching, you have to add on certain things. For example, visual aids, the smart board, outside classroom, devices, online, hybrid mode, whatsoever. Clear? Welcome innovation.
Am I audible, friends? Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. Okay. Actually, there was a power cut, so uh, I hope you're able to see my slide now on the screen. Are you able to see the slide? Hello, friends. I'm sorry, there's some network issue. I hope I'm audible and I'm visible also. Insha ma'am, are you there? Am I audible and visible? Okay. Okay. So I'm starting once again. Now, what is teaching? So first of all, we have to understand this that many parents come to us during the PTM. I have seen, or without the PTM, also parents come to us, and then they ask, मैम मेरा बेटा बहुत टीवी देखता है सर मेरा बेटा दिन भर टीवी देखता है आप उसको थोड़ा समझाइए ना सर प्लीज उसको थोड़ा समझाइए कहते हैं ना पेरेंट्स ऐसा और उसके बाद वो क्यों कहते हैं ऐसा ऐसा क्या है कि माँ बाप अपने बच्चे को नहीं समझा सकते और हम समझाते हैं क्योंकि उनको ये फेथ है दैट द टीचर विल बी एबल टू ब्रिंग आउट सम बिहेवियरल चेंज इन माय चाइल्ड सो एजुकेशन इज फ्रेंड्स ऑल अबाउट दिस ओनली आप एक बच्चा जो स्कूल आना भी नहीं चाहता स्कूल आने के समय खूब जोर जोर से रोता है आई एम टॉकिंग अबाउट प्ले ग्रुप और नर्सरी आप वहां से एक बच्चे को पढ़ाकर समझाकर टीचिंग करके आप उसको एक ऐसे पोजीशन पे लेकर खड़ा करते हो वेयर ही गोज आउट इनटू द वर्ल्ड एंड डज समथिंग प्रोडक्टिव फॉर द वर्ल्ड not only for himself or herself there are such alumni in your school also I'm sure so what are you doing from that crying baby you are changing the behavior of the child you're remolding and finally you're bringing the child to a stage where the child's behavior has become so desirable for the entire community आपने उसको इंग्लिश मैथ्स हिंदी के कुछ फैक्ट्स नहीं याद कराए फ्रेंड्स आपने उसकी पूरी बिहेवियर को मोल्ड किया ताकि वो समाज में एक प्रोडक्टिव इंसान बनकर खड़ा हो सके दैट इज एजुकेशन दैट इज टीचिंग ऑल अबाउट so please don't bother about your facts, about your multiplication tables. Here's the line. About your multiplication tables. Please don't bother about that. What you need to actually bother about is that
मेरा बच्चा समाज के लिए प्रोडक्टिव हो रहा है या नहीं, मेरे बच्चे के बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं, कल वो रोते हुए स्कूल आया था, आज वो मुस्कुरा कर आ रहा है या नहीं। दैट इज वॉट एजुकेशन इज। सो ये कैसे होगा? ये सिर्फ आपके लेक्चर मेथड से तो पॉसिबल नहीं है। हाउ विल यू डू दैट? प्लीज रिमेंबर, इफ यू आर अ मीडियोकर टीचर यू विल टेल, यानी आप लेक्चर देंगे। बट if you are a good teacher you will explain, if you are a superior teacher you will demonstrate, जो भी आप बोल रहे हैं वो आप करके दिखाओगे, and if you're a great teacher you will inspire. So remember, teaching is all about changing the behavior of the child. Now एक बच्चे का behavior कैसे change होगा ये मुझे बताओ. How will it change? It will only change when the learning process, teaching learning process which is happening in the class is engaged, is effective. You have been able to engage the children. You have been able to give something very good to the students. That will lead to the behavioral changes in the child. Otherwise, you will only remain, friends, a history teacher, an English teacher, a maths teacher. Please don't add that tag. Just call yourself a teacher. You are a teacher. You can bring behavioral changes in your child. You can engage your child. You can effectively produce something in the child which will bring out these beautiful changes in the life of the child. So let us first come to the learning styles. Learning style बच्चों की 4 होती हैं, which you can easily remember by remembering a word, VARK model of learning. VARK, VARK model of learning. ये VARK model of learning क्या है? V is for visual, A is for auditory, K is for kinesthetic, R is for read write and K is for kinesthetic. VARK model of learning. Yani, in our class, out of the 40 students who are sitting there are some people who learn best when you show them something. When there is something to show them visually, they can interpret and learn very easily. Who are the auditory learners? जो लेक्चर से भी समझ जाते हैं. They are the easiest learners. आप बोलते जाओ वो समझते जाएंगे चीजों को without any visual aids also. काइनेस्थेटिक लर्नर क्या है? जो कहते हैं मैम सर आप कितना भी अच्छा बोलो, कितना भी अच्छा दिखाओ, जब तक मैं डेमो नहीं देखूंगी मुझे नहीं समझ में आएगा. आपको याद है विम बार का एक ऐड आता है, डेमो दिखाऊं? आपको इन बच्चों को हमेशा डेमो दिखाना पड़ेगा. जस्ट अ मिनट. हेलो. Yes, sir. Sir, I'm in the sessions and after the session is when I'll get back. Okay, so this is, they want a demo. And what are read write learners? When you tell them, beta, please stand up and read this paragraph, come on the board and solve this sum. They want to do some reading and writing all the time. And they will keep on learning. अभी ऐसा नहीं है कि जो रीड राइट होते हैं वो विजुअल बिल्कुल नहीं होते या काइनेस्थेटिक जीरो होते हैं. ऐसा नहीं है फ्रेंड्स. प्रोटीन, फॉर एग्जांपल आप पनीर खा रहे हो तो क्या आप सिर्फ प्रोटीन खा रहे हो? नहीं, आप प्रोटीन के साथ थोड़ा विटामिन भी खा रहे हो, थोड़ा मिनरल्स भी खा रहे हो, लेकिन प्रोटीन उसमें सबसे ज्यादा है पनीर में. सिमिलरली एक बच्चा हायर एंड पे ही कैन बी विजुअल और शी कैन बी विजुअल और ऑडिटरी और किनेस्थेटिक और रीड राइट, लेकिन ऑल आर थोड़ी बहुत इनपुट सबकी होती है. Ideally, what I want to tell you is 60% of your learners are visual in the class. Now tell me, ईमानदारी से आप अपने आप को बोली, मुझे नहीं बताना, आप खुद से पूछिए कि कितने लोग आप लोग ऐसे हैं जो अपने क्लास में विजुअल एड्स का जमकर इस्तेमाल करते हैं. Because 60% are visual learners. Only 30% are auditory learners. And 8% almost are your kinesthetic learners. So now it is time, friends, to introspect and understand why students fail in your class. There's a very beautiful book named Why Students Fail. Please read that book, you will understand. Unit clearly says that every time a child fails, along with the child, teachers are also failing. No child fails because he is a buddhu. No. वो इस दुनिया में आया है, अपने हाथ पैर यूज कर सक रहा है, खा पी सक रहा है, बना सक रहा है, घूम सक रहा है, कपड़े पहन सक रहा है, तो बुद्धू कैसे है? हम उसकी स्टाइल में उसको नहीं पढ़ा पा रहे हैं. सो देयर इज अ फेलियर. So please, now you have to introspect and find out. I cannot judge anybody. I'm not being judgmental by any methods. Maybe you are trying all this, still the child is not able to perform well, then there must be some other problem. But it is very important for the teacher to identify the problem whatsoever it may be.
Are you getting my point? So please remember, whenever you plan a lesson plan, चाहे आपको अकबर पढ़ाना हो या बीरबल या polynomial या quadrilateral या English में कोई story पढ़ानी है, I don't know what you're going to teach, what subject you are teaching in the class. But whatever you are teaching, there should be something for the visual, something for the auditory, something for the kinesthetic, and something for the read-write learners. Very, very important. Now let us come to your teaching styles. These are the kinesthetic learners. Teaching styles पे आते हैं. तो हमारी teaching styles क्या है, friends? There are, according to the Grasha theory, there are 5 teaching styles. There are 5. I'm not audible. Somebody's written, I am not audible. Okay, give your comments, please, if I'm not audible. Yes or no. So, Grasha says there are 5 teaching styles. Number 1 is expert teaching style. एक्सपर्ट स्टाइल में आपको सारे स्टाइल्स का मैं थोड़ा थोड़ा बताते जा रही हूँ, आप अपने से समझो आप किस स्टाइल के हो, और अगर कुछ ऑथेंटिक चाहिए आपको कि अब मुझे कैसे पता चलेगा मैं किस स्टाइल के हूँ, तो मैं आपको लिंक एक दे रही हूँ, उस लिंक को कॉपी करें और फिर मैं बताऊंगी कैसे आपको समझ में आएगा. एक्सपर्ट स्टाइल होता है जो कहता है, सी आई एम द टीचर, आई नो एवरीथिंग, सो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट यू हैव टू डू. आई एम द एक्सपर्ट इन द क्लास. आप लोगों में से कोई एक्सपर्ट नहीं. अभी जैसे मैम किसी ने एक कमेंट किया कि यू आर नॉट ऑडिबल, तो मैं अगर ये कहूं हाउ आई एम नॉट ऑडिबल, आई एम ऑडिबल, मेरा माइक ऑन है, मेरी वाईफाई अच्छी है, तो आई एम एक्सपर्ट. लेकिन जैसे मैंने आपसे पूछा ना, प्लीज कमेंट एंड टेल मी वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट. दिस इज नॉट अ एक्सपर्ट स्टाइल. इसका मतलब आप सबको लेकर चल रहे हो. तो एक्सपर्ट टीचर क्या होता है, ऊपर में होता है और वो इमेजिन करते हैं एवरीबॉडी इज बिलो मी, सो व्हाटएवर आई एम डिलीवरिंग इज द बेस्ट, is the most correct information, and just take it from me. I am the best. Next is a facilitator style. वो facilitate करता है. Children are learning. ठीक है, आप पढ़ा रहे हो, बच्चे सीख रहे हैं. लेकिन then again the reverse also happens. You go with the students. बेटा समझ में आया, इसको कैसे करोगे, अच्छा ये ऐसे भी कर सकते हो, अच्छा this is a new method, you know this, okay how can you learn, अच्छा you have made this punchline for learning. जैसे मुझे वार्क विजुअल नहीं याद हो रहा था, मैंने कहते वार्क VARK, तो ये वर्ड मैंने बना दिया. ये बच्चे भी बना सकते थे और आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो. सो व्हेनेवर द चिल्ड्रन आर लर्निंग समथिंग, यू आर आल्सो प्रेजेंट देयर एंड टुगेदर you are gelling and playing and loving and enjoying and learning in the class. Okay, you facilitate learning. You don't dictate learning, you facilitate. जैसे मैंने आपको क्या बोला कि मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप देख लेना आपका टीचिंग स्टाइल. सो आई एम behaving like a facilitator here. I'm not behaving like an expert कि लिंक भी मैं दूंगी, समझाऊंगी भी मैं, कैलकुलेशन भी मैं करूंगी, आपको बताऊंगी. No. Are you understanding the difference? Next is a personal model. This पर मजेदार है. Personal model teaching जो लोग करते हैं, they always want to love to give personal examples. Like, मेरे बेटे ने ऐसा किया, मुझे एक बार ऐसा हुआ, मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था तो फलाना चीज हुआ. So they love to give personal examples. It's a good way of teaching. Okay. Delegate means मैंने आपको बता दिया, सर आपको ये करना है, बेटा you go and read this, you go and do this, you go and do this chapter, you go and do this sum. डेलीगेट कर दिया और उसके बाद हम आराम करना है. जैसे वो वाले टीचर्स होते हैं ना, उनकी इन्विजिलेशन ड्यूटी लगाओ, तो मैं देखती हूँ they choose a window from where they can see something good. So when they are doing invigilation duty, they delegate the work to the students and they look outside the window. This was just a small example to make you happy. So they are called delegators who don't do things themselves completely. They delegate the work and they sit back. But of course, when somebody needs help, you're always there. And next is formal authority. Formal means where all the teaching happens from the teacher's side and the teacher becomes an authority in the class. That you will learn the way I want you to teach. That is formal. You understand the difference between formal and expert? Expert teacher says, I know everything. I will give you everything. And the formal authority teacher says that things will pass on from me. So that authority will stay with me and classroom will only happen formally. वहां कुछ हो सकता है, हल्ला हंगामा नहीं हो, गाना बजाना नहीं हो, हंसना रोना नहीं हो. So everything will be in a very formal style. पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उसके बाद नोटबुक करेक्शन होगा, उसके बाद क्लास टेस्ट होंगे, उसके बाद एग्जिट चिट्स होंगे, whatever. The teacher decides that. Okay. So you've understood what are these: formal authority, personal model, facilitator model, delegator model. All these models are very clear to you. Now,
There is another model, very important. You don't forget this. Please, I love this. My personal favorite. Differentiated instruction. I've discussed this also with you. You know, every child is different. मान लीजिए मैं एक वैन ह्यूसन का शर्ट खरीदूं, महंगी सी शर्ट, मुझे ना इससे ज्यादा ऊपर की ब्रांड पता भी नहीं है, नहीं तो आप लोगों को शायद पता हो। मुझे लगता है वैन ह्यूसन ही बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत महंगा ब्रांड है, वो मेरे लेवल वहीं तक है। सो आई एम गिविंग यू वैन ह्यूसन एग्जांपल। मैंने एक वैन ह्यूसन का बहुत बढ़िया शर्ट खरीदा, मैंने सबसे एक्सपेंसिव शर्ट, और साइज क्या खरीदी मैंने अपने हस्बैंड की साइज ले ली, ठीक है। अब मैं उसी वैन ह्यूसन की शर्ट को लेकर जाऊं और मेरे बेटे को भी पहना दूं, मेरे ससुर जी को भी पहना दूं, मेरे फादर को भी पहना दूं और मेरे हस्बैंड को भी पहना दूं। अब आप मुझे बताओ, वो सब हैंडसम और अच्छे लगेंगे उस वैन ह्यूसन के महंगे वाले शर्ट में? विल दे लुक वेरी गुड? यस और नो? All of them should look very good in that shirt. Somebody's laughing. I understood. Yes or no? No. Why no? Because suppose my husband's size is 36 and my father's size is 42. How will he look good in that shirt? My son's size may be 28. How will he look good in that shirt? It will be a misfit for them. Similarly, teachers, let me make it very clear. Maybe you are an excellent teacher, wonderful teacher, very good teacher. But your teaching style may not suit everybody. So आपको क्या करना है? अपनी टीचिंग स्टाइल में कैंची चलानी है, पेन चलाना है, पेंसिल चलाना है, और उस टीचिंग स्टाइल को उस बच्चे के अकॉर्डिंग बनाना है। No teacher is good for everybody. But if you keep on tailoring yourself, you become good for everybody. So please कैंची चलाइए, इरेजर चलाइए अपनी टीचिंग मेथड में. It's very, very important. Out of the 5 methods that we just now saw, teacher-centered are, of course, you understand this, formal authority, expert, and personal model. And student-centered are facilitator, delegator, personal comes in this also. So अगर आप टीचर सेंटर क्लास चाहते मैं रहूं, बच्चे शांति से मेरी क्लास सुने। बहुत लोग बड़ी शान से कहते हैं, मैम मैं जब क्लास में जाता हूं या जाती हूं, there's pin drop silence. मैं धीरे से सोचती हूं अपने दिमाग में, you are not a good teacher. Why do you need pin drop silence in your class? Everybody should learn and speak. आप जब कोई नई चीज सीखते थे कि आप लोग अपने आप को देखिए फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस जब से मेरा सेशन शुरू हुआ, यू पीपल आर सेंडिंग इमोजीज एंड मैसेजेस. व्हाई? बिकॉज यू आर लाइकिंग द सेशन, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, और तो आप में इतनी इंथुसियाज्म आ गई, इतनी एनर्जी आपके अंदर घुस गई है कि आपके फिंगर्स चल ही रहे हैं. कुछ लोग सो गए होंगे तो उनको नहीं अच्छा लग रहा सेशन, दैट इज व्हाई दे आर स्लीपिंग. So I don't expect, no principal expects a pin drop silence school. That means no learning is happening there. Everybody's sleeping. When learning is happening, there's love, there's enthusiasm, there's happiness. So there is not gossip, there is learning happening. Are you getting my point? So that is called a student-centered approach. So go for a student-centered approach and avoid teacher-centered approaches. Your approach depends on the classroom size, बच्चों की जरूरतें, learning needs, your course content, what are you teaching, level of the students learning style, वर्क थ्योरी. तो वर्क थ्योरी के हिसाब से आप क्या ज्यादा यूज कर सकते हो? अभी एक्सपर्ट यूज कर सकते हो, फैसिलिटेटर यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो? अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, विलिंगनेस टू टेक रिस्क एंड इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट स्टाइल्स. अगर किसी टीचर को पता ही नहीं होगा कि क्या क्या स्टाइल्स होते हैं, तो बेचारा अपने स्टाइल को चेंज कैसे करेगा, अच्छा कैसे बनाएगा? So you should know about these styles. So if now this slide is for your screen, what do you call it? Screenshot style, screenshot. अगर आप अपनी टीचिंग स्टाइल को जानना चाहते हैं तो इस लिंक पे जाएंगे ना. जब आप इस लिंक पे जाएंगे तो आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे. आप कैसे करेंगे मैं समझा रही हूँ. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आप आंसर्स देंगे, उसमें एवरी आंसर इज करेक्ट. जो आपकी टीचिंग स्टाइल होगी उसके हिसाब से आप आंसर देंगे. एवरी स्टाइल इज करेक्ट. At the end of that, they will tell you, if your answer is 1, you get this many points. If your answer is 2, you get this many points. If your answer is 3, this many points. Then ये total में आप add कर लेंगे. फिर वो कहेगा, if your score is between 150 to 200, you are this. If your score is between 200 to 250, you follow this style. So easily you will come to know that what is your teaching style. लेकिन कुछ भी हो आपकी teaching style, what is best is, no teaching model is complete and best. As teachers, we should practice a blend of all teaching styles depending upon
depending upon the classroom size. जैसे मैंने ये स्टाइल आपको बोला था, depending upon the classroom size, learners' needs, course content, level of students' learning style, availability of time, willingness to take risk, information about different methods. ठीक है? So depending upon this, you have to choose a teaching style and keep on changing your teaching styles. अपने आप को unpredictable रखिए बिल्कुल बच्चों के लिए. जितना आप unpredictable होंगे, उतना आपके बच्चे आपके सेशन को enjoy करेंगे. So teachers should develop their own teaching style, which can be a mix and match of so many teaching styles, and that will promote responsibility, cooperation, courage, and self-esteem. Okay. That's all from my side, friends. Know your children. Know yourself. सबसे पहले तो अपने आप को देखिए, introspect करिए. Know your children. Self-awareness is very, very important, teachers. You should know what you are, what are your shortcomings, what are your strengths. Do a SWOT analysis of yourself. I hope you know what SWOT analysis. S for strength, W for weakness, O for opportunities, and T for threat. So know your shortcomings. Do a SWOT analysis of yourself. एंड देन यू विल रियलाइज कि करने के लिए जिंदगी में भी बहुत कुछ है, अभी थकना नहीं है, अभी चलते जाना है, क्योंकि मैं यहाँ हूं और मुझे वहां पहुंचना है. ओके और जैसे जैसे आप बढ़ोगे, तरक्की करोगे, नई नई चीजें सीखोगे, आपके बच्चे भी उससे फायदा पाएंगे. That's all from my side. Once again, thank you, Patliputra Sahodaya, for this wonderful opportunity. And you've been so interactive throughout, and I'm so sorry I could not give you a chance to answer because the duration did not provide me the chance, so today I have become an expert teacher. So thank you so much, Patliputra Sahodaya. Friends, if you have any questions now, it's your turn. If you have any questions, please come up with your questions. I'll be very happy to answer them if I can, of course. I can see only thank yous. Okay. Okay, then. Thank you so much, all of you. Once again, thank you, Insha ma'am, for being there. Thank you, Patliputra Sahodaya, for giving me this opportunity. Thank you. May I quit now? May I leave the session now? Thank you, ma'am. Thank you so much, dear. Thank you.